हेलो एवरीवन जैसा कभी आपने देखा था वी आर स्टार्टिंग ए चैनल विद द प्लेलिस्ट जिसमें हम आइसर के जो भी एलुमनी हैं जो अभी ग्रेजुएट होने के बाद अलग अलग फाइनेंस सेक्टर में है, अलग कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। इन कंटिन्यूइंग विद दैट आज हमारे साथ है वन ऑफ आवर फ्रेंड। जैसे मैं सुमित और जो अभी हमारे फ्रेंड ज्वाइन करने वाले हैं, वी आर जस्ट लाइक एंड आई थिंक ट्रायो थे, everything we share each other. So I feel very happy to invite Mr. Shubham Mishra, and he is a gold medalist in his department. पिछले 4-5 साल में जो उनका कोर्स था उनमें अपनी डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सीपीआई रखा हुआ है। मैं अभी उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। यस शुभम। Yeah, thanks a lot, Kunal, for inviting me on your channel. So let me introduce myself. So I am Shubham Mishra, a BSMS graduate in Economic Sciences from IISER Bhopal, with a minor in Data Science. I'm currently working in Nomura as an analyst in the Scenario Definition Stress Testing team, Mumbai. My academic and professional journey has been centered on blending economics with data science to learn more about financial markets and on doing research on policy issues. Yeah, so that is about me. यस। जैसे शुभम ने बताया, ही इज करंटली इन इन्वेस्टमेंट बैंक वर्किंग एज अ टॉप प्रोफाइल ऑफ रिस्क एनालिस्ट। Starting with our very first question, Shubham. Hmm. How did you know about IISER and why did you join IISER? आपका क्या Okay, मोटिवेशन रहा इकोनॉमिक्स ज्वाइन okay, करने का? यस। okay. So as everyone else in our batch or people from our time, although it's not too early, it was not too far uh, away in time. But yeah, so the thing was that we all started with, as everyone has started with the preparation, JE preparation to get into an IIT or do engineering. But after the results came out, and so for so if I have to tell you about why I joined IISER or something, so a couple of people apart from my parents played a very important role in this. One of my elder brothers currently is associate research scientist at National Research Center, Canada. He suggested about IISER aptitude test, and the other person was one of my uncles who lived nearby. He suggested IISER to me. So these couple of people played a very important role in me joining IISER rather than a peculiar engineering college. And the other thing which fascinated me about IISER was that it has interdisciplinary approach towards things. For example, I can study economics as well as study science along with it. So these few things sort of motivated me to join IISER. यस। जैसा आप सभी ने सुना शुभम के मोटिवेशन को, जो वाई चूज आइसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि लोगों का ये थोड़ा रहता है जो आइसर इज फॉर बेसिकली नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उनमें आइसर भोपाल में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी अलग से है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी अलग से है। इकोनॉमिक्स में होता क्या है, व्हाट आर द कोर्स इन करिकुलम? हम सुनते हैं शुभम से। शुभम, कैन यू बीट एक्सप्लेन आपने जो 5 साल वहाँ बिताए हैं, कैसा था कोर्स करिकुलम, कैसा था रिगरसनेस? आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक काफ़ी नया चीज़ है, हम 12th तक पढ़े नहीं रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होता है हमने, जैसा जैसा हमें पता है जो हम इंजीनियरिंग करेंगे। इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या रहता है, इंक्लाइन किधर रहता है, हाउ मच इज मैथ्स? थोड़ा आप बताएंगे इसके बारे में? So I can talk as per my experience. So what I experienced economics was, for me, the best part of economics was our faculties at IISER. So be it the be it a very difficult chapter in core economics or be it a very simple thing that we had to do, our faculties ensured it that we could grasp or get a hold of each and everything that was being taught. The So coming back to your question, you asked about the curriculum. As so at IISER, what we follow is that we focus on core economics as well as we focus on empirics as well. So we had courses econometrics, time series analysis, money banking and financial markets.
such courses. As well as on the contrary, we also had courses such as mechanism design, courses such as game theory, microeconomics, to so that a student who is just starting out in economics, or someone who has not done much economics before, should get an overall idea of what economics is about, and what all things one can learn if he or she moves further with economics as a subject. Yeah, so that was. यस यस सो आप सभी ने सुना जो बेसिकली इकोनॉमिक्स को पहले बेसिक लेवल में पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। मतलब मैंने भी थोड़े एक दो कोर्सेज किए थे इकोनॉमिक्स में, जस्ट लाइक इकोनोमेट्रिक्स। सो हमको पता होगा, हम दोनों ने एक साथ ही किया था। सो बेसिकली आपको ग्रेजुअली आपको सिखाया जाता है, आपको बेसिक टर्म्स से, उसके बाद फिर एडवांस कोर्सेस होते हैं जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे उन्होंने बताया मैकेनिज्म डिजाइन। सो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। और जस्ट लाइक नॉट वेरी सारे आईआईटीज में आई गेस नहीं, आईआईटी कानपुर में बैचलर्स ऑफ साइंस का एंड मास्टर्स ऑफ साइंस का कोर्सेज है, एंड आई गेस आईआईटी बॉम्बे में है। सो इट इज़ काइंड यूनिक थिंग जो आपको मैथमेटिकल अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है, जैसे शुभ हमने बहुत डिटेल में बताया जो कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं और कैसे पढ़ाया जाता है। सो गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जैसे हम अपने सारे वीडियोस में पूछते हैं, सो रोल ऑफ ए सीनियर, रोल ऑफ मेंटर्स, फैकल्टीज बहुत एक इंपॉर्टेंट रहता है आपके आने वाले फ्यूचर में। आप कैसे किस पाथ पे जाओगे, आपको क्या करना चाहिए फॉर प्लेसमेंट और एनीथिंग हायर स्टडीज, जैसे आईएसआर को कहा जाता है वो पीएचडीज के लिए बेस्ट है, वहाँ पे इनकलकेट किया जाता है, नर्चर किया जाता है। तो शुभम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके सीनियर्स से आपका इंटरेक्शन कैसा था? whom did you choose as your mentor? आपको कोई फैकल्टी जो आपको गाइड किया? So, to answer your question, पहले तो I'd like to say that that there's this very cliche thing जो हमने सुना है, that if you want something very bad, you just need to ask the right questions and you just need to pursue it. So for me, I'll say that you have been my friend for a very long time now, so you already know my faculty, the faculties at IISER, my friend circle, and everyone around me helped me or shaped me the person who I am right now. I'll say that it was more of my faculties, my mentors, and my friends in shaping me who I am, additional to what my hard work or what my efforts were. So about my mentors, so I have a lot of mentors if I have to name them. So in our department, since we were the second batch in our institute, every faculty was approachable, everyone was willing to help you with anything. You just had to go through them, you just had to go to them, you just had to ask the right questions to them. you they just you just had to ensure that they found something in you. By found something in you, they could find you sincere, they could find you hardworking, and then they at times went out of their way to help me. So if I had to tell the names, I could start with Sandeep sir, Mr. Dr. Sandeep Kumar Agrawal. He's currently a faculty at IISER. Then there's Parikshit Dey, Ragul Srinivasan. Then there's other faculties such as Weapon sir. Then there's Bishwajit Patra. Then there was one faculty who left us, and currently he's in IIT Jodhpur. I'm forgetting his name, but he taught us econometrics one. Uh, uh, I'm just forgetting his name, but yeah, he was a very good faculty. Then about my seniors. So seniors at our institute, because as already mentioned, we were the second batch, they were the first batch. They were also very supportive. You could reach out to any senior at any point in time, and they were willing to help. Also, we did not have this culture where seniors would grill you for anything. Yeah, they were just very helpful. So yeah, that was all about it. यस, तो शुभम ने जैसे बताया, बस आपको अपने तरह से भी आपको दिखाना पड़ेगा जो यू आर सिंसियर, यू आर हार्ड वर्किंग, देन ओनली Yeah. फैकल्टीज विल, मीन्स उनको पता होना चाहिए ना, मैं जिस स्टूडेंट को हेल्प कर रहा हूँ ही इज रियली वर्किंग हार्ड, वो अपने एक्सटेंट तक जाएगा अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। सो अब सिंसियरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शुभम इज वन ऑफ द टॉपर। सो आप समझ सकते हो जो चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज वे में सीखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए एक कॉलेज में रहते हुए इस रिसोर्स में, क्योंकि ऐसा एक नेशनल लेवल का कॉलेज है, एवरी टाइप ऑफ रिसोर्सेस हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा करना है तो यू हैव टू, यू कैन से ऑप्टिमाइज एवरीथिंग एंड यूटिलाइज एज मच एज यू कैन।
So coming to one of the most important question, जो प्लेसमेंट एडवाइजर, ओके। सो Yeah. शुभम का अचीवमेंट से आपको ये जरूर यकीन हो जाएगा जो प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आई विल नॉट से बहुत अच्छे से हो रहा है, बट इट हैज स्टार्टेड। सो अभी मैं ही पूछूंगा शुभम से, जो आपका प्लेसमेंट जर्नी कैसा रहा, प्लेसमेंट आपने कैसे प्रिपरेशन किया, और हाउ वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग एन एकेडमिया टू द इंडस्ट्री। यस शुभम। Okay. So for me, the placements, I can talk about myself. And as Kunal already mentioned, yeah, placements at IISER, since it's a very new institute, it's in its nascent stage of development. It started. It was started probably in. It was started in 2013. So yeah, it would take some time to be as established as IITs because they have been there for 60 odd years and we have just started out. So, coming to the point that how I got placed and what was my preparation for it. So for me, what worked out the most was that I was quite. You tried to go through the flow of what was taught in the class, because one thing I can guarantee, if you're really attentive, sincere with what they are teaching at you at IISER, the course curriculum in itself is well equipped for you to get placed in any firm. I'm not talking about if you're preparing for something very specific, very niche, then it you might require some additional preparation. But if you're attentive and sincere with your preparation uh, for studies, for coursework, you would get selected for 80% of the firms that come on campus. Now, if I had to add some things which helped me particularly, were my empirical skills, my internship under faculties, and, and then the courses such as econometrics. Then we had probability courses, linear algebra courses, and then the course on time series analysis, money banking, and financial markets. So all these courses helped me sail through this process easily. So that was what I did, and hopefully that should work out for you as well, for anyone preparing for placement. तो जैसे शुभम ने बताया, यू शुड बी वेरी थॉरो व्हाट वी आर लर्निंग इन द क्लास। कोर्सेज भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, जैसे इकोनोमेट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी क्लियर अबाउट योर बेसिक्स। आपको अगर बेसिक्स नहीं पता था, ऐसा कुछ नहीं होता है आप 2 दिन में कुछ सीख गए रट के, वो आप बता देते हो, आपको प्लेसमेंट लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उन प्लेसमेंट में जो आ रहे हैं वो अच्छे से आपको जानेंगे, जो आपने कैसा सीखा है। इट इज़ अ लॉन्ग रन ना, तो आपको रहना भी है उस इंडस्ट्री में। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर बेसिक्स। So coming to another question, since you are in finance and finance sector की जाके ऐसा रहता है, जैसे हमने इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें लगता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, हमें कुछ पता है, या फिर आईसर से हम लोग जा रहे हैं तो पीएचडी करने जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। सो फाइनेंस सेक्टर के बारे में बहुत कम जानकारी रहती है बच्चों को। सो आप जरा बताइए, ताकि बेसिक ऐसे लेमन टर्म में भी लोगों को, अगर उनको वाकई इंटरेस्ट हो तो वो जाने, सीखे, और वो जैसे गूगल सर्च भी करते हैं उनको पता चले हाँ ये टर्म्स है, जैसे वो टर्म्स है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, स्टॉक मार्केट ये सब बहुत बज़वर्ड बहुत ज़्यादा है फाइनेंस को लेके। सो आप थोड़ा एक बेसिक नॉलेज टाइम में आप थोड़ा बताइए क्या होता है, और आपका हल्का सा आप बताइए। तो फिनांस, अगर किसी को जैसे परस्यू करना है फिनांस, व्हाट फिनांस इज, तो आई से कि डिपेंडिंग अपॉन द रोल, आपको किस तरीके के रोल्स चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स जो सब वेल पेड होती हैं, सबसे ज्यादा वेल पेड होती हैं, एंड सो देयर आर अ स्पेक्ट्रम ऑफ रोल्स यू कैन से इन फाइनेंस एज वेल। जितना बढ़िया रोल, जितना बेटर रोल आपको चाहिए, उतना यू शुड बी वेल इक्विप्ड with statistical skills, with a quantitative skills. You should be good at coding, you should be good at probability stats, you should be well equipped with fundamentals of algebra, calculus, and all these things. Because at the end of the day, this is all maths that you have to do over there. Or if you're planning for IB roles, इस तरीके के भी roles होते हैं which are well paid. So I'll suggest कि finance में ये होता है, and then you should be well aware about the markets around you. आपके आसपास चीजें क्या हो रही हैं. You should be well aware about things, how things are happening, what is.
फॉर एग्जाम्पल अगर आज मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस हो जाता है तो हाउ वुड इट इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस, एंड उस ऑयल प्राइसेस की वजह से व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट्स इफ यू आर इनटू फाइनेंस और ये सब। तो आई से कि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। यस। तो शुभम ने इसे बताया सभी को, जो यू शुड बी गुड विथ योर स्टैटिस्टिकल नॉलेज, जो जितना ज़रूरत होता है स्किल्स आप वो देखें, और मार्केट ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बताया, एक एग्जांपल दिया है ये इधर अरेबियन में, जैसे आपको ऑयल वाला पार्ट है। सो इस मतलब थोड़ा आपको ये पता रहेगा तो आपको पता रहेगा हाँ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताया। सो कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, सो मैं लास्ट में यही पूछना चाहूँगा शुभम, जो आपका क्या सजेशन रहेगा और आप क्या बताना चाहोगे उन बच्चों को जो अभी 12th देने वाले हैं, 12th के बाद अभी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आईसर आने वाले हैं या फिर आईटीज़ जाने वाले हैं, और उन बच्चों के बारे में भी जिन्होंने आईसर ज्वाइन कर लिया है 3rd ईयर 2nd ईयर में, वो कैसे अपने आने वाले ईयर्स को इम्प्रूव करें, कैसा उनका रहना चाहिए पढ़ने का स्ट्रक्चर, और ताकि वो अगर जॉब करना चाहे या फिर पीएचडी करना चाहे तो वो कैसे करें? So, since you've asked a question and there are two parts to your question, so answering the first part, that advice to the juniors who are preparing for these competitive exams to get into a good engineering college or IISERs. So for them, I'll suggest be sincere with your preparation. Put in all that you have, because that would, for the most part, decide the rest of your life. Yeah, but don't for now be stubborn that you want this branch or that branch. You get into a good college. For the first year, you can go through all of the courses that are being taught, and then you can decide further which branch or which field you want to get into. Now, coming to the second part of your question, that my advice to the juniors who would be sitting for placements or who are preparing for placements. So that would be, first, focus on fundamentals. As already mentioned, build a solid foundation in stats, econometrics, and programming, because these skills are essential, both even if you go for academia or you want to get into finance. Then, secondly, things which matter are your internships, because these internships give a hint or signal the firms that you've already worked for some time into one of the things which for which they have come to hire you. So that is the second thing that I'll say. The third, I'll say, stay curious. By being curious, I mean be aware of what is going around you. Explore diverse areas in economics and finance. Try experimenting with projects and courses that push you out of your comfort zone. Okay, and the last, I'll say that networking, it really matters. Connect with your alumni and professionals and gain insights into different career paths and trajectories. So that is what. And last but not the least, follow this channel started by my friends. Because थैंक they'll यू be सो मच post. शुभम, वेरी Yeah. नाइसली एक्सप्लेन बाय शुभम। सो कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बी नाइस एंड कनेक्शन आपको बना के रखना चाहिए, जो हम बार बार बोलते हैं, यू शुड बी इन गेट टच विद योर सीनियर्स कलीग्स। वो कनेक्शन है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी करना चाहो, आगे पीएचडी करना चाहो, आप जॉब करना चाहो, जॉब के बाद अगर आप बिजनेस करना चाहो, तो आपको आइडिया रहेगा, आपको यू शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर seniors and colleagues. So, with this, we come to the end of the interview. Very thank you very much, Subham, for coming to our interview channel and sharing these valuable insights. होप सो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको पता चला होगा फाइनेंस सेक्टर के बारे में, आईसर के बारे में, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बारे में, प्लेसमेंट कैसे होते हैं, और उनसे उनको मदद मिले काफ़ी ज़्यादा। सो दैट्स ऑल, वी कम टू द एंड एंड थैंक यू शुभम। Thanks for having me. It's a pleasure talking to थैंक you. यू।